What is up, ladies and gentlemen? एक नया एपिसोड, एक और नया वीक, और चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमारे पास डिस्कस करने के लिए है क्या। तो आज सबसे पहले हम नजर डालेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर और टूर्नामेंट के थोड़े डिटेल्स जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे मोनेसी के बारे में, हु इज लाइक द यंगेस्ट CS:GO प्लेयर इन द प्रोफेशनल सर्किट राइट नाउ। फिर आगे बढ़ेंगे, एक इंटरव्यू भी होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज सुपर जॉनी एंड यू गाइस आर वाचिंग द वर्ल्ड ऑफ esports। Alrighty, ladies and gentlemen, the Call of Duty Mobile World Championship announce हो चुका है, so let's have a look. This is my moment. My moment. This is an absolute display from Truly. This is do or die time. Cause this is my moment. Bang! My moment. Cause this is my moment. तो टूर्नामेंट 5 स्टेजेस में खेला जाएगा: सोलो प्ले, टीम प्ले, रीजनल क्वालिफायर्स, रीजनल प्लेऑफ्स एंड ऑफ कोर्स द फाइनल्स। अब इस टूर्नामेंट के अंदर हर स्किल लेवल के प्लेयर को खेलने का मौका मिलेगा और पार्टिसिपेंट्स को इन गेम रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि ऑपरेटर स्किन्स और वेपन स्किन्स। एंड द प्राइस पूल ऑफ दिस टूर्नामेंट, इट्स अ वॉपिंग $2 मिलियन, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो स्टेज 1 स्टार्ट होने जा रहा है 31 मार्च से, एंड मेरी आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है, दैट स्टे ट्यून्ड एंड डोंट मिस द एक्शन। G2 मोनेसी की अगर बात करें, आई बिलीव ही इज वन ऑफ द बेस्ट CS:GO प्लेयर्स प्लेइंग राइट नाउ। इस 16 साल के इंडिविजुअल में जितना फायर पावर है वो आई थिंक आज की डेट के प्रोज से भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, कुछ प्रोज से। बट चलिए अब जानते हैं इस इंसान की स्टोरी जिसने आते ही G2 का पूरा नक्शा बदल दिया। People call me Yellow Flash. With MONESY striking first, gonna turn the scales. Naf has found one, but MONESY, oh, it's close. He's getting wrapped on the right side. Oh, MONESY on for the ace. MONESY, it's a damn good try. The irony of MONESY being surprised by other people's fast reactions is seemingly lost on him. Mind you, his own speed does seem to confuse himself sometimes. Maybe he thinks it's a challenge. He says, and we're not shitting you here, that he wants to be faster. Faster. Faster! Some of you might have laughed when Carlos dropped so much money on MONESY, but there's only one man who's laughing now. When I was 12, I got my first 10 level on Faceit. From this moment, I knew that I'm gonna be more better. I'm not saying that I'm good. I'm not good enough, but you always need to go further and you need to learn. That's why I'm there.
when I was 14, I played my first official match on national TV. It was something like I put my goal that I want to play in front of the big crowd. I think I can be better in some moments. I think this is the time when I can perform. Like in some moments, I need to relax a bit because if people go on me, of course, I will kill them. But when they throw nades, when they throw flashes, you need to dodge. You need to do something. There, when I need to be quick. I need to adapt a bit for Tier 1. I think I can be good. MONESY, just like a scantily clad teenage version of myself, is also playing a whole lot of video games. The great minds of Twitter, in fact, worked out he'd played CSGO for something like 11% of the time he'd been alive. I mean, you don't get that good by doing homework, after all. Try as he might to hide it, though, MONESY knew he was good. People call me Yellow Flash. Yeah, it's from Naruto. I watched Naruto and I saw this guy, Minato. He's like Yellow Flash. He was so fast in his way. And I wanted to be like him. That's why I put my nickname on Steam, also Yellow Flash, and his profile picture. Yeah, so I want to be faster. Be faster. Yeah, Okay. I want to be more faster. Okay. MONESY on catwalk finds the timing. 8 seconds. If he can drop the bomb, it'd be everything. But it travels into the site. 1-on-2 for MONESY now. It's sacrificial. Gives his position away. He wants MONESY's hand gone. Look at his man. Oh, the shepherd staff takes down the goat. And he takes Simple out of the round to give it to G2. At least I do have one thing in common with him. My parents also have no idea what I'm talking about when I mention Na'Vi and G2. My parents, honestly, they didn't understand. Like, they didn't understand what is Na'Vi because they didn't like in this sphere. They only knew that I'm just playing. But I tried to explain them. I showed what is G2, and now at this moment, they always support me. They always, when I play, they always watch these games. Even my grandma, she watched every YouTube videos about me, Twitch streams, everything. So yeah, I think they're happy. They're my biggest fans. This is merely the beginning of the story of the Yellow Flash, and we wouldn't want to get in the way of the middle and the end, so watch the f*** out. Also, hi Ilya's grandma, if you're watching. Your grandson's kind of the coolest. और अगर लोगों की स्टोरीज की बात कर रहे हैं, so what we have next is our own very special interview. Alrighty, ladies and gentlemen, a new day, a new interview, and a new person joining us for this interview. Please welcome DEEKAY, who represent Hyderabad FC. So DEEKAY, welcome to the show. कैसे हैं आप? I'm pretty good. We are towards the end of the season and I think काफी अच्छा experience रहा है मेरा यहाँ पे and काफी excited भी हूँ आपके साथ interview करने मिल रहा है. मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मेरे को आपसे बात करने मिल रहा है क्योंकि थोड़े दिन पहले हम लोग खेलने गए थे. वी वेंट आउट फॉर अ फुटबॉल मैच. आपको चोट लगी थी. होप यू आर डूइंग वेल. लाइक Yeah, like it's considerably better but अभी थोड़ा और टाइम लगेगा रिकवर होने में. वो तो कोई नहीं. आई होप कि आपकी रिकवरी जो है जल्दी हो ताकि हम एक बार फिर से खेलने के लिए उतरे और इस बारी होपफुली हम लोग इंजरीज अवॉइड कर पाएंगे. बट DEEKAY, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मैं बहुत एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा. DEEKAY, लाइक इनिशियल्स आपने रखे हैं अपने नाम के IGN. Is that it? Yeah, I mean earlier like my first username was Darvesh12. So that was my name only with 2 numbers at the end.
after 3-4 years I was like मजा नहीं आ रहा है इस यूजरनेम में. इतने अलग अलग टाइप के यूजरनेम देखने को मिलते थे, जैसे कॉड में स्लेयर और मर्सीलेस किलर, ऐसे ऐसे. तो वैसा कुछ आ नहीं रहा था, तो आई वाज लाइक कुछ नया रखना है. Felt like DK is like, it sounds cooler when you look at the in-game angle. जी. And also अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट के फैन है तो बस ड्रिफ्ट किंग. बट चलिए तो डीके, आपकी ई स्पोर्ट्स जर्नी आपने कैसे स्टार्ट करी? आई मीन नाम तो कूल पिक किया है आपने काफी ज्यादा, बट फिर अपने परफॉर्मेंस में वो कूलनेस कैसे लेकर आए? So my first ultimate team was in FIFA 13 and Wow. उस टाइम तो मोड काफी एडिक्टिव है, तो आपको अपनी खुद की टीम बनानी पड़ती है. You have to grind for the better cards. So 13, 14, 15 I just played ultimate team for the fun of it. 16 में I played my first LAN event and got that competitive rush in me. So felt like okay, yeah, I can do this. कि I can read the opponent, I can do better, I can be a better player. So this is what the first LAN tournament pushed me towards being a better player. And then afterwards, so no looking back, 17, 18 say I was competing in regular tournaments, and I've played a lot of ESL, I've played nationals in AFGC and here also. So I think it's going pretty well, my journey. I mean, it has been going pretty awesome, I would say, क्योंकि जैसा आपने मेंशन किया, जो भी अभी तक मेजर माइलस्टोन्स रहे हैं इंडियन फीफा सीन के, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ देम. ESL, नेशनल टूर्नामेंट्स एंड नाउ eISL. सबसे पहली चीज़ तो ये जानना चाहूँगा कि डिड यू एवर एक्सपेक्ट कि ऐसा मौका मिलेगा टू कम्पीट फॉर 78 लाख रुपीस का प्राइस पूल इस eISL का है, क्लब्स को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, इंडियन क्लब्स को? डिड यू एवर थिंक दैट वाज गोना हैपन? So talking about the prize pool, so it's the biggest ever which FIFA has ever had. I've seen जैसे Dota and League of Legends जैसी गेम्स है, उनका तो बहुत ही massive prize pool होता है. तो it was like a dream कि इसके लिए compete करना. So with that being said, when I played my first tournament in 16-17, हमारा maximum prize pool went to 1 to 2 lakhs. Then I think अभी तक before eISL, the biggest prize pool I've seen is 10 to 15 lakh. And that also was a major event जिसमें बहुत competitive था. So of course ये eISL did not expect कि इतना बड़ा prize pool होगा. Talking about the clubs aspect of it, we've seen a lot of other domestic leagues across the UK, Spain and MLS also. So that was something जो काफी anticipated था in us, because हमारी भी ISL grow हो रहा था काफी. So एक दूसरे में मतलब जोक्स में बोलते थे कि कभी इन क्लब को मोहन बगान को रिप्रेजेंट करेंगे, हैदराबाद को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस बीइंग लाइक दिस कमिंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अस, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू ओनली. क्योंकि अगेन यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट दिस कि इंडिया का ई स्पोर्ट्स सीन जो है थोड़ा उतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है जितना बाहर की कंट्रीज में, बट स्टिल eISL आई मीन टुक अ बिग स्टेप फॉरवर्ड कि eISL को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड एक स्ट्रक्चर जैसा अपने का प्रोवाइड किया गया इंडियन फीफा एथलीट्स को. हाउ हैप्पी वर यू जब क्वालिफिकेशन आपने खेला और आप क्वालिफाई करे eISL के लिए? क्या इमोशंस थे? Emotions were on a high because this was a stage where I had to prove myself. I actually before this हमारा global series होता था last year तक, जिसपे हम rankings देखते थे and tournament performances. So इसमें ऐसा था कि top 22 players of the country ही qualify हो सकते हैं because 22 sports है. तो एक अपने esteem के लिए boost था कि इसमें qualify होना है, अपने आप को prove करना है. तो after that I was like yes, I am a part of the top 22. Now I think it's time to prove myself in the league. एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है जैसा आपने मेंशन किया. कंट्री के सिर्फ टॉप 22 प्लेयर्स को मौका मिला यहाँ पे आने का एंड यू वर वन ऑफ देम. और व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन लाइक? सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा, जब कंपेटिटिवली आप पहले भी इतना खेल रहे थे फीफा, पेरेंट्स सपोर्ट करते थे इस चीज़ को? So it's been a journey of ups and downs in that scenario. Like parents have been fully supportive of me gaming since day one. Like they are the ones जिन्होंने console दिलाया, of course. So उतना उसमें प्रॉब्लम नहीं था, बट कभी कभी क्या होता था, इट वाज इंटरफियरिंग विद माय स्टडीज. सो वो तो आई थिंक इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड यू विल फाइंड कि अगर जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं तो बंद कर दो टाइप्स. बट विद दैट बीइंग सेड, माय मॉम हैज बीन सुपर सपोर्टिव ऑफ माय कंपेटिटिव जर्नी. इवन व्हेन
the qualifiers were happening now. It was 3 days in a row कि सारे के क्लब्स के qualifiers हो रहे हैं. तो मैंने मॉम को बोला कि ये 3 days मैं रूम से बाहर नहीं आऊँगा, मेरे को सारे कॉल्स खेलने हैं जो भी क्लब हो जाए. एंड सब कुछ मतलब वो इंटरप्ट भी ज़्यादा नहीं करती थी. उनको पता है अगर मैं टूर्नामेंट में हूँ तो बस मेरे को नॉक करके बोलती थी खाना रेडी हो गया तो ले लो. तो इट्स बिन वेरी लाइक शी इज़ बिन वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ मी एंड माई जर्नी सिंस डे वन. एंड जैसे क्वालिफाई भी हुआ, I told her that there will be a bubble of 4 months. So she was like, हाँ ठीक है, it's okay, you can go. एंड जब आपने प्राइस पूल का अमाउंट बताया, क्योंकि पेरेंट्स यूजुअली सोचते हैं, आई थिंक ये माँ बाप का प्यार होता है कि अगर बच्चा कुछ करने में खुश है दे विल लेट देम डू इट अंटिल स्टडीज का, जैसा आपने मेंशन किया कि स्टडीज पे इफेक्ट हो, और वो जायज सी बात है. आई मीन इवन ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट. बचपन में समझ नहीं आता था, अब आ जाता है क्योंकि बड़े हो चुके हैं सब. बट जब प्राइस पूल आपने बताया घर पे कि गाइस बाय द वे 78 lakhs का प्राइस पूल है, तब क्या रिएक्शन था? शी वाज लाइक इतना तो कभी प्राइस पूल के लिए आप कभी compete नहीं करे. एंड जितना भी अभी तक जैसे जीता है तो 10-15,000 होता है मैक्सिमम 20-30 जीत गए हो गए. बट इतना प्राइस पूल तो कभी किया ही नहीं. तो शी वाज आल्सो लाइक प्रीटी एक्साइटेड फॉर मी बिकॉज आई वाज प्रीटी एक्साइटेड माई सेल्फ. घर पे भी मैं पूरा पंप अप होके बताता रहा था कि हाँ हो गया यहाँ पे, एंड अब जाऊँगा, क्लब से बात होगी, जर्सी वर्सी मिलेगी. सो वही मतलब वो छोटी छोटी एक्साइटमेंट में वो भी मेरे लिए काफ़ी एक्साइट हुई. एंड उनसे भी लाइक बात होती है, जैसे मैच होता है तो उनको लिंक भेज देता हूँ, वो देखती है, फिर वो भी बोलती है इसकी जगह ये क्यों नहीं किया, जैसे गलती करता हो. तो दैट हैज़ बीन गुड ओनली. ये मैं सुनना चाहता था एक बारी. मैंने अभी तक बहुत लोगों से ये सवाल पूछे कि क्या कभी घर से डांट पड़ी है कि अरे ये करो जल्दी जीतोगे, अच्छे से जीतोगे, मैच क्यों खराब खेल रहे हो, अच्छे से जीतो. ये पहली बार किसी ने सच बोला. सो आई अप्रिशिएट दैट. ठीक है, क्योंकि आप प्रीटी श्योर इंडियन पेरेंट्स है, ई स्पोर्ट्स है, हारने पे तो डांट पड़ेगी तभी. बट इसी के साथ अब एक चीज जानना चाहूंगा, बिकॉज जैसा आपने मेंशन किया कि पहले ना प्राइस पूल होता था ना टूर्नामेंट्स का, मीन स्केल जो था वो भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं था. आपका पहला रिएक्शन क्या था कि क्वालिफाई तो कर लिया, एक्साइटमेंट उस चीज की थी, जब यहाँ पे आए यू सॉ आप 22 प्लेयर्स हैं, आपके अलावा 21 और लोग हैं जो इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं, उनके साथ आप खेल रहे हैं, वो फिर भी ठीक है. बट देयर वाज समथिंग न्यू दैट वाज हैपनिंग, दैट वाज ऑल दीस फोटोशूट्स, ऑल दीस इंटरव्यूज. कैसा रिएक्शन था? सो ऑफ कोर्स जैसे हम बबल में एंटर किए थे, फर्स्ट 3 days तो वर पैक्ड विद आवर शूट्स फॉर इंटरव्यूज एंड आवर ग्रुप शूट्स. सो दैट वाज प्रीटी ओवरवेलमिंग कि हमने देखो फर्स्ट डे हमारा शूट था जिसमें वी हैड टू जस्ट डिस्प्ले आवर इमोशंस. दैट वेंट ऑन टिल 2 in the morning. मेरा लास्ट शूट था. तो ऑफ कोर्स देन नेक्स्ट डे भी सुबह से दोपहर से शूट्स थे. तो तब तो बहुत एक्साइटमेंट हुई कि एक बारी में कि हमने टूर्नामेंट्स खेले हैं एंड फोटोज वगैरह भी जीतते हुए पोस्ट करी है. बट इतना मेजर शूट्स लाइक इतना ग्रीन स्क्रीन्स एंड वो इतना टाइम दे रहे हैं हमको, हमारा हेयर कर रहे हैं, मतलब हेयर एंड मेकअप हो रहा है. तो ऑफ कोर्स शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था. देन एज दीज मंथ्स रोल्ड बाय तो थोड़ा यूज्ड टू हो गए कि कल शूट है, चलो चलते हैं. तो ऑफ कोर्स गोना मिस दिस लाइफस्टाइल व्हेन आई गो आउट. थोड़ा सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल की आई गेस अब आदत हो चुकी है कि मेकअप हो रहा है, हेयर लग रहा है. एंड एज यू मेंशन्ड दोस जर्सीज, आई मीन जो आपने हैदराबाद एफसी की जर्सी अभी भी पहनी हुई है और आप लोग काफी प्राइड के साथ पहनते हैं, बिकॉज़ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है क्लब को रिप्रेजेंट कर पाना. आपके फैंस भी आई एम प्रीटी श्योर डेफिनेटली बने होंगे इन 4 महीनों के अंदर. कितने फैंस के मैसेज आए हैं आपके पास, और कितने फैंस के, आई मीन कौन सा ऐसा मैसेज है जो हमें आपको हमेशा याद रहेगा? सो फैंस से ऑफ कोर्स बात हुई है इस बारे में कि जैसे कभी कभी हमारे रिजल्ट नहीं भी आए तो एक मैं बात बोलना चाहूँगा, हैदराबाद के फैंस बहुत स्पेशल है उस चीज़ में. उन्होंने कभी ऐसे हेट नहीं करा, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्लब्स जिनके फैंस बहुत पैशनेट है. जैसे अगर उनका लॉस भी आता है तो हिट कमेंट्स आते हैं, अगर वो जीतते हैं तो उतना ही प्यार देते हैं. हैदराबाद वाले फैंस जो है लॉस पे भी उतना ही सपोर्ट करते हैं. एंड आई रिमेंबर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन वंस विद अ फैन कि अब तो सीजन ऑलमोस्ट हो गया एंड टॉप 4 नहीं हो पाया, होपफुली मतलब आप इतना डिसअपॉइंट नहीं होंगे. ही वाज लाइक इट्स ओके, समटाइम्स थिंग्स हैपन. एंड लाइक एक तो हमारा प्लस पॉइंट ये होगा कि इवन दो वी डिड नॉट क्वालिफाई फॉर टॉप 4, बट हमारा जो आईएसएल में क्लब है उनका बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड सीजन गया है, वो सेकंड फिनिश कर है. आई थिंक दैट हैज आल्सो पुट अस ऑन अ रिलैक्स पोजीशन कि ठीक है क्लब तो अच्छा कर रहा है एटलीस्ट, तो हमको इतना प्रेशर नहीं है. आई थिंक इस पे रिलैक्स होने की जगह आपको थोड़ा और मोटिवेट होना चाहिए नेक्स्ट सीजन के लिए कि अगली बार हमें भी मैच करना है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, वी नीड टू बी इन द टॉप 2 एज वेल. बट डीके, अब एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे कि दिस वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द न्यू प्लेयर्स, क्योंकि आप लोगों ने
बहुत तेजी से आई मीन काफ़ी सारी आंखें, काफ़ी सारा अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब किया है सिंस यू गाइस हैव बीन इन द eISL. काफ़ी लोग अब फीफा के ई स्पोर्ट्स सीन के साथ जुड़ना चाहेंगे. व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? क्योंकि कई लोगों का ये कंसेप्शन रहता है दैट FUT यू नीड मनी टू compete in FIFA. So I don't think that's true. Even though the top pro players all over the world Yeah. spend massive amounts of money for Ultimate Team, but I think now more than ever you've got so many opportunities. We've got ESL Cups happening. We've got these ISL qualifiers even the first time, and we have the national team selection qualifiers also. Yeah. So opportunities की कमी तो in today's date नहीं है. So what I would suggest is you play these tournaments even if you're not confident in your gameplay, play and look at your game, like save, record करो and देखो कि क्या गलत कर रहे हो, because that has helped me improve the most in my game. Earlier I was when I started competing, मैं खेलता था and मैंने नोटिस किया कि मैं अपनी बॉल की पोजेशन बहुत इजीली रह देता हूँ. I like to dribble a lot. Yeah. तो उस चीज़ पे मैंने वर्क करा and of course रिजल्ट्स दिखे, यहाँ पे भी हूँ मैं and कितना अचीव कर लिया. सो ऑफ कोर्स इस चीज़ में तो आपको अपना गेम प्ले एनालाइज करके खुद ही अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो. एग्जैक्टली, आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपनी मिस्टेक्स को पहले तो रिकॉर्ड करो, फिर फिगर आउट करो गलत क्या किया एंड देन फिक्स इट. एक ही तरीका है इम्प्रूव करके आगे बढ़ने का. एंड इसी के साथ एक आखिरी चीज़ डीके, मैसेज आपके पेरेंट्स के लिए, जैसा आपने बताया आपकी मॉम आपके काफ़ी क्लोज है, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, अपने फैंस के लिए और अपने दोस्तों के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं? So everyone involved in my journey, including my parents, my friends, have been super supportive. So when I told you that 3 days qualifiers थे सारे clubs के, तो जब first 2 days नहीं हुआ था, I was so disappointed, disheartened, and I did not talk properly. तो उस टाइम पे भी घर पे भी सपोर्ट था मॉम का, it's okay, हो जाएगा, इतना खेल रहा है. तो फ्रेंड्स भी थे जो बोलते थे हाँ ठीक है, वी नो योर क्वालिटी, वी नो कि हो जाएगा, थोड़ा चिल है. एंड वो सपोर्ट ने आई थिंक मेरे को काफ़ी हेल्प करा है एज अ पर्सन एंड एज अ प्लेयर हियर ऑल्सो. when my friends and my mom are watching, they're supporting the streams. So I love you all for that. Thank you so much. And even the fans, when you support me, even when things don't go my way. So I really appreciate that. आई थिंक डीके ये जो लव और सपोर्ट आपकी तरफ आ रहा है ये आते ही रहेगा, बिकॉज यू आर अ वेरी नाइस पर्सन टू हैंग आउट विद. ये कॉन्वर्सेशन जो थी मेरे को भी आपसे बात करके मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस इंटरव्यू बडी. तो आज के लिए बस इतना ही. मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू नॉट वन गेमिंग यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल. Until next time, take care, bye bye.